plotting these two signals, xn was this and hn was this. So when we plot these, this will vary from 0 to 4 and this will vary from 0 to 6 like this. And then if we have to find out this summation, this is convolution summation, then we need to make this signal. This signal is made by replicating the reflection of hk and then shifting it by n. So this hn minus k will vary from n minus 6 to n, so that total length will be 7. Okay, n minus 6 to n will be 7 circles. Okay, so we were discussing, we were able to find out we found out that just a minute. We found out that when we shift this from the left hand side to the right hand side, it is not transparent. Like this. Okay, so when n is 0, first case was n is 0, so when n was 0 there was no overlapping, hence this summand will be 0. Summand means जिसका sum करना है हमें. This summand will be 0, so there will be no yn. Then there will be partial overlap between when n is in between this n point is in between 0 to 4. सॉरी, इस पे करना है ना. हाँ, जब 0 to 4 के बीच में there will be partial overlap between h n minus k and h k. partial overlap होगा, फिर ये और राइट में चलेगा. अगर इस n minus 6 जो है 4 से ऊपर हो जाता है और 6 के बीच में रहता है, then there will be complete overlap. ठीक है, there will be complete overlap और summation जो होगा 0 to 4 करना पड़ेगा. एंड देन इससे आगे जाता है तो देयर विल बी ए पार्शियल ओवरलैप, यानी कि 6 और 10 के बीच में जब रहता है n, तो देयर विल बी पार्शियल ओवरलैप और हमें समेशन करना पड़ेगा n माइनस 6 से 4 तक, क्योंकि ओवरलैपिंग विल बी n माइनस 6 टू 4. एंड देन n माइनस 6 अगर 4 के ऊपर है, यानी कि n इज ग्रेटर देन 10, n is greater than 10, then there will be no overlapping, hence the yn will be 0. So this was the ranges that we defined earlier in the last class. Now we have to find out the sum for these ranges. Okay, we have to find out the sum for these ranges, and how to do that? xk is basically 1, xk is 1 and 1 multiplied by h minus nk. What is h minus nk? h minus nk is hn is alpha raised to power n. hn is alpha raised to power n. So what will be hn minus nk? It will be alpha raised to power n minus k. Alpha raised to power n minus k. Okay, so we need to find out this sum. Getting my point? Second year, we need to find out this sum. Okay, basically this will be yn. This will be your yn for different ranges. Okay, so first range में तो 0 है. second range में क्या होगा? It will be, sum will be performed 0 to n, यानी कि summation k changing from 0 to n alpha raised to power n minus k. Okay, so this is a GP sum. All of you know what is GP. GP is इसका common ratio होता है. So it is a GP sum and k is varying from 0 to n. So when k varies from 0 to n, तो इसमें अगर हम
0 रख देंगे तो माइनस के आ जाएगा, प्लस फिर 1 रखेंगे तो अल्फा रेज टू पावर 1 माइनस के प्लस अल्फा रेज टू पावर 2 माइनस के, okay, like this and so on up to alpha raised to power n minus k. So basically this is the sum that we have to perform. Now minus alpha raised to power minus k can be taken outside. Okay, alpha raised to power minus k can be taken outside so that it becomes 1 plus alpha raised to power 2 and so on plus alpha raised to power n. Oh, sorry. I have put it sum over the n, sum over the k हमें करना है, sorry, ये नहीं होगा, ये होगा, k की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो यानी कि अल्फा रेज टू पावर, जब k की वैल्यू 0 है तो इधर आएगा अल्फा रेज टू पावर n प्लस अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस n पे नहीं हो रहा ना, k पे हो रहा है सम, k इज द डमी वेरिएबल, ओके, k इज द डमी वेरिएबल नॉट n, गलत कर दिया था हमने पहले, है ना, ये हो जाएगा अल्फा रेज टू पावर 0 विल बी 1, ये हो जाएगा सम, ओके, देन व्हाट विल बी that can be written as 1 plus, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस so on अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1, सेम सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, 1 को पहले लिख लिया, इससे पहले अल्फा आएगा, अल्फा लिख दिया, अल्फा 2 एंड सो ऑन n तक, तो यानी कि सम है कहां से कहां तक, अल्फा रेज टू पावर 1, if अल्फा इज ग्रेटर देन 1 देन इट्स सम विल बी, ये फाइनाइट जीपी है, फाइनाइट जीपी का सम आपको पता ही है, इफ इट इज फाइनाइट जीपी ए रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला होता है अल्फा रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय फाइनाइट जीपी का सम होता ही, सीधा यहीं पे लिख देता हूँ, अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1, अगर ये n तक वेरी कर रहा है तो 1 2 3 एंड सो ऑन n तक और प्लस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स विल बी अल्फा रेज टू पावर n प्लस 1, दिस विल बी द सम, ओके, सो सेकंड रेंज में ये आएगा सम, दिस विल बी योर y, सेकंड रेंज, ओके, यस सर, वो ना यहाँ पर 1 प्लस 1 बाय अल्फा करना चलेगा सीरीज, आई थिंक सो है 1 प्लस हमने 1 प्लस अल्फा फिर ऐसे सीरीजली है ना, शायद 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा ऐसा करना चाहिए, नहीं n डिक्रीज हो रहा है ना, n डिक्रीज हो रहा है ना, इसका यहाँ पर अल्फा है ना, आप बाहर ले लीजिए तो अंदर जो बचेगा वो तो 1 प्लस बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो 0 टू n है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी n प्लस 1, ये तो कंफर्म है ना, इफ k चेंजेस फ्रॉम 0 टू n, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1 एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम n एंड एंडिंग एट 1, सो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सम को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये तो मैंने आपको हम दिखाने के लिए कराया, मतलब देयर वाज नो नीड टू राइट इट लाइक दिस आल्सो, यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो, बट क्योंकि फेमिलियर हम इस तरीके से हमसे हैं, इस वजह से मैंने लिखा है, बात तो एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1, ओके, सो आप अल्फा रेस्ट, क्योंकि सम या 3 प्लस 4 लिख लो या 4 प्लस 3 लिख लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, देयरफॉर आई हैव रिटन इट लाइक दिस आल्सो, क्योंकि हम फैमिलियर ऐसे होते हैं, 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर से ऐसे भी, दोनों बराबर चीज है,
और क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n+1 है और कॉमन रेशियो अल्फा है, देन द सम विल बी दिस. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, सो थर्ड वाज व्हाट वाज थर्ड रेंज में क्या है, 4 to 6 and k is varying from 0 to 4. तो 4 to 6 रेंज में k is varying from 0 to 4. सो अब जो है हमको n तक नहीं करना, अब हमारा फाइनाइट सम हो जाएगा. ये जो है n तक नहीं होगा, ये टोटल 4 तक होगा. सम विल बी 0 to 4. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? नाउ यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स विल बी देयर अगर इस रेंज में हम सम करेंगे. सेकेंड ईयर 0 to 4 अगर हमें सम करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगी ना. सेकेंड ईयर नंबर ऑफ टर्म्स 5 हो जाएंगी ना. सो व्हाट विल बी दैट विल बी अल्फा रेज़ टू पावर n प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n-1 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर n-2. चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा. n-3 अल्फा रेज़ टू पावर n-4. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 5. 1 2 3 4 5 एंड k विल बी वेरिंग फ्रॉम 0 to 4. सो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 2 3 4, तो टोटल 4. ओके, सो इसका सम करना चाहें हम तो अल्फा रेज़ टू पावर n वी कैन टेक कॉमन. 1 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर -1 प्लस अल्फा रेज़ टू पावर -2. So this will be, and again it is a finite GP. So number of terms here is 5. So what will be the common ratio? Common ratio is alpha raised to power -1. So 1 minus alpha raised to power -1 raised to power 5. The number of terms are 5 divided by 1 minus common ratio. Common ratio is alpha raised to power -1. So this will be the sum, and you can write it to be like this also. Alpha raised to power n minus alpha raised to power n-5 divided by 1 minus alpha raised to power -1. Okay, it looks little bit unsymmetrical, so we can write it to be like this also. अगर हम इसमें अल्फा से ऐड कर दें, एक अल्फा इसमें बढ़ा दें, अगर तो अल्फा से ऊपर नीचे हमने कर दिया मल्टीप्लाई. सो अल्फा -1 yn थर्ड रेंज में y और yn विल बी दिस. थर्ड रेंज में yn विल बी दिस. ओके, 6 to 10 अगर n होगा तो ओवरलैपिंग विल बी n-6 to 4. तो समेशन विल बी परफॉर्म फ्रॉम n-6 to 4. ओके, समेशन विल बी परफॉर्म फ्रॉम n-6 to 4. विल हियर सपोज r, so that r changes from 0 to 10. The total number of terms will be 10 minus n. 10 minus n. If r is equal to k minus n plus 6, so that when k is n minus 6, r is 0, and when k is 4, r is 10 minus n. ये हमने एक डमी वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया r. When you introduce the dummy variable r, your summation will change to this. r is changing from 0 to 10 minus n, so total number of terms will be 10 minus n plus 1, yani 11 minus n. So in the fifth range there is no overlapping, so yn will be 0, and for fourth range you will get it to be like this. Okay, so this will be your yn.